In normal chemical reactions, you can classify reaction as exergonic or endergonic. Exergonic reactions release energy because the energy of the products is lower than the energy of the reactants. Endergonic reactions require energy because the products are at a higher energy than the reactants. Exergonic reactions will generally happen faster than endergonic reactions because the activation energy is smaller than endergonic reactions. Activation energy is the minimum amount of energy required to overcome the transition state of a reaction. When an appropriate catalyst is introduced to the reaction, the activation energy required to create products is lowered. The catalyst will help break or form bonds in the substrate molecules by binding to the substrate in such a way that less energy is needed overall to overcome the transition state. Since the activation energy is reduced, enzymes will cause the rate of reaction to increase, often by a factor of 1,000,000 or more. In living things, enzymes are used constantly to transform one chemical into another. It is very rare, however, for this transformation to take only one step. Typically, there's a pathway with many small steps involving many different enzymes along the way. Metabolic pathways are a sequence of chemical reactions undergone by a compound or class of compounds in a living organism. Metabolic pathways can occur in a chain of reactions, like the pathway that converts phenylalanine into fumarate and acetyl acetate. It takes 6 steps in the metabolic pathway to finally get to the end products. Some metabolic pathways occur in a cycle instead of a chain, like the Calvin cycle of photosynthesis, which uses carbon dioxide to make glucose. Enzymes act on specific substrates. They fit together at the active site, almost like a lock and key. Once they're bound together, the enzyme can act on the substrate. It may break the substrate down or build it up with another substrate. The enzyme may also have an allosteric site, which is a binding site other than the active site. It can alter the shape and activity of the enzyme. The active sites and allosteric sites can be hijacked by inhibitors, which will slow or even stop the action of an enzyme. There are 2 categories of inhibitors: competitive and non-competitive inhibitors. Competitive inhibitors will bind at the active site, preventing the substrate from being able to bind. A real example of a competitive inhibitor is galactose, which binds to the active site of lactase, blocking the substrate lactose from being able to bind. A non-competitive inhibitor will bind with an allosteric site on the enzyme, which results in the change of shape of the enzyme. This shape change will prevent the substrate from being able to fit into the active site. A real example of a non-competitive inhibitor is iodine, which binds to an allosteric site on lactase. It alters the shape of the enzyme and prevents lactose from binding to the active site. When we look at a graph of the rate of reaction and substrate concentration, we can see normal enzyme action. The rate of reaction increases with the addition of more substrate until it reaches an equilibrium point. When a competitive inhibitor is present, it's still possible to reach the same rate of reaction as the uninhibited enzyme, but the substrate concentration will have to be much higher to achieve this rate. When a non-competitive inhibitor is added, the enzyme cannot reach the same rate of reaction as the uninhibited enzyme. This is because the binding site is altered, which won't be able to react with the substrate no matter what the concentration is. Only the enzymes that are not bound to inhibitors will be able to affect the rate of reaction, resulting in a lower maximum reaction rate. Sometimes, at the end of a metabolic pathway, a product is made which will inhibit one of the first enzymes in the pathway. This is called end product inhibition. Inhibiting enzymes in the first step will slow the production and eventually stop the production of the end product. This is a built-in regulation system for many metabolic pathways. One example pathway is here, where threonine, the initial substrate, goes through many transformations by multiple enzymes and eventually forms isoleucine as the end product.
Isoleucine is a non-competitive inhibitor for the first enzyme in the pathway called threonine deaminase. When the concentration of isoleucine increases, the number of inhibited enzymes also increases until the pathway is shut down. Thanks for watching this episode of Teacher's Pet. Don't forget to like and subscribe and follow me on Twitter @SciencePet. It says catalase is an enzyme. Okay, so we are talking about an enzyme that catalyzes the breakdown of hydrogen peroxide, which is a toxic waste product of metabolism. Okay, so this is hydrogen peroxide. Catalase beta is the enzyme, and we are getting water and oxygen. Okay, then. This figure shows the result of an investigation into the effect of hydrogen peroxide concentration on the rate of catalase control reaction with and without the presence of two different inhibitors. ठीक है, तो एक ही ग्राफ में they have shown us the reactions without the inhibitors, ठीक है, and they have used inhibitors also. So let's see what they have done here. अच्छा, पहले question read करो, then we'll go back to the graph. So they're saying the inhibitors used in the investigation have different modes of action. Identify which of the curves X, Y, and Z are the result for एक reaction है बेटा, the reaction with a non-competitive inhibitor. Non-competitive inhibitor beta is the one which would actually bind to the, for example, beta, if like this is your enzyme, let's say, okay, and this is the active site. Beta, active site is the depression. Okay, so non-competitive inhibitor jo hota hai beta, it binds to the site other than the active site. So it might bind somewhere here. So once it binds to the site which is away from the active site, what it does is beta, it actually causes the enzyme to change its shape. So let's say, for example, हमारा active site की shape जो है बेटा, it will go a conformational change. So the substrate can no longer attach to it. So this is what a non-competitive inhibitor does. ठीक है? It causes this active site to change its shape. तो उन्होंने एक curve इस तरह का दिखाया है. So just imagine बेटा, if the substrate can no longer attach to it, so do you think the product will be formed? Will we get any product? No. नो, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको जो प्रोडक्ट है बेटे वो नहीं मिलेगा. फाइन. सेकेंड है कंपैरेटिव इनहिबिटर. कंपैरेटिव इनहिबिटर में क्या है बेटे, यू हैव द सेम एंजाइम, ठीक है, बट अब उस केस में क्या है, यू हैव like another substance which is structurally similar to the active site. Yes, structurally similar to the substrate actually. ठीक है, structurally similar का मतलब बेटा उसकी कोई ना कोई चीज सिमिलर होगी, वो exactly same नहीं होगा. Structure would be something similar to it, so that it can attach to the active site. So if it can attach to the active site, it will actually prevent the substrate from entering it. So आपके पास already substrate होंगे, but substrate cannot bind to it because this area is already actually occupied with the with other substance, with a comparative inhibitor. इस केस में हम क्या करते हैं, if we increase the concentration of substrate, so a large concentration of substrate can knock out these substances from here. तो वो कंपैरेटिव इनहिबिटर्स को रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो इस केस में बेटा ये टेम्परेरी अटैचमेंट होती है. सो इफ यू इंक्रीज द सबस्ट्रेट, यू कैन इवेंचुअली बेटा गेट द प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट मिल सकता है ओनली इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. इट विल नॉक आउट दिस सब्सटेंस, ये कंपैरेटिव इनहिबिटर, एंड यू कैन गेट द प्रोडक्ट. इवेंचुअली दिस कैन हैपन, ठीक है. और एक थर्ड आपको ग्राफिक्स में दिखाया द रिएक्शन विच इज विदाउट एन इनहिबिटर. सो विदाउट एन इनहिबिटर बेटा जो आपका कर्व होगा, दैट विल बी द मोस्ट स्टीपेस्ट ऑफ देम ऑल. सो नाउ लुक एट द डायग्राम है, लुक एट द ग्राफ नाउ. ठीक है, आपको तीन उन्होंने ग्राफ दिए हैं एक ही डायग्राम में. दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है. यू कैन सी बेटा एज द कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग हियर, एंड वी कैन सी द रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बेटा टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है. सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई बेटा एक्स क्या शो कर रहा है, मेरा एक्स किस चीज का कर्व है, वाई किस चीज का है, और जेड किस चीज का है. एंड सी बेटा दिस इज लाइक यू हैव एक्चुअली गॉट द प्रोडक्ट्स हियर. यहाँ पे वी मैक्स रीच कर गया है. Hydrogen peroxide is actually your substrate. So now you tell me, what do you think? X किस चीज का कर्व हो सकता है? I'll take you back to the question, read it, और अब decide करो बेटे. मैं without inhibitor वाला. अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है जो X है, that is without inhibitor. ठीक है, so let me write the answer sir, and फिर हम आंसर किसे टैली करेंगे. So without inhibitor is X. Okay. Now, what do you think बेटे? Y could be a curve of. ये किसका हो सकता है?
ठीक है, रेट मैम ऑफ रिएक्शन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कंपैरेटिव, गुड। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गए, रीजन क्या यही है कि बेटे कि जो एक्टिव साइट है उसमें दूसरा सब्सटेंस लग गया कंपैरेटिव इनहिबिटर, इट इज नॉट लेटिंग द सबस्ट्रेट अटैच टू इट, बट वंस यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि बेटा सबस्ट्रेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वी कैन स्टिल गेट द सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो डेफिनेटली Y इज comparative, so let's write it here. Acha. And then Z should be definitely non-comparative, but what do you notice here, bete? Difference क्या लग रहा है तुम्हें in inhibitor comparative और non-comparative के कर्व्स में? ये क्या चीज शो कर रही है? मैम तो रिएक्शन स्टॉप हो गया है एक सर्टेन अमाउंट के बाद। बिल्कुल, क्योंकि एक्टिव साइट ही डिस्टॉर्ट हो गई है। तो जब एक्टिव साइट डिस्टॉर्ट हो गई है बेटा, सबस्ट्रेट कैन नो लॉन्गर अटैच टू इट और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रही आपके यहाँ पे, ठीक है। और अक्सर नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स, ठीक है, उस कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटा वो परमानेंटली ही डैमेज उसको कर देते हैं, ठीक है। तो हेयर बेटा आपका जो प्रोडक्ट भी है, यू कैन सी के बेटा यू आर नॉट गेटिंग द सेम अमाउंट देयर, ओके। सो ठीक है, स्टिल लेट्स जस्ट tally from the answer key also. In fact, here it is. The first one, okay. So it's okay, with non-comparative was a Z, comparative Y and X, okay, and we had Z, Y and X, okay. Ab all correct, only then 1 mark will be credited, okay. Then let's look at the second one, okay. Ab now relate beta jo abhi humne Vmax ko discuss kiya hai. So with reference to the figure, compare the, up see beta here you have to compare, okay. So and you have been given 3 curves. So compare the maximum rate of reaction Vmax and the Michaelis-Menten constant Km for these curves. So compare करना बेटा, so take into account like if not 3 of them तो at least 2 होने चाहिए, ठीक है। So let's see, सबसे पहले अब जब compare कर रहे हो बेटा तो उसमें similarity भी देखो, difference भी देखो। So सबसे पहले क्या चीज similar लग रही है इनके अंदर तुम्हें? जी बेटे, X और Y स्टार्टिंग पॉइंट, क्या चीज सिमिलर है इसमें? स्टार्टिंग पॉइंट Vmax, ठीक है, इन दोनों का Vmax सेम है, ठीक है। अगर इफ यू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, ठीक है, सो Vmax हियर इट इज एक्चुअली बेटा कमिंग एट 10, तो Vmax इज सेम। तो ये आपका तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। ये टोटल आपका क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ठीक है। तो इट मींस 2 मार्क्स इसके हैं और 2 मार्क्स इसके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंपैरिजन आपने कहा, ठीक है, एक्स और वाई दोनों में Vmax सेम है। अच्छा, अब ये तो एक सिमिलैरिटी होगी। अब एनी डिफरेंस दैट यू सी, क्योंकि हमें Z को भी इंक्लूड करना है, so, और कोई चीज नोटिस करो। जी बेटे, जी बेटे, Z का Vmax क्या लग रहा है तुम्हें, क्या होगा अगर हम इसका Vmax निकालें? लेट्स से हम ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक बेटे, Z के Vmax में और यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक? इसको ड्रॉ कर लो मैं। जी बेटे, देयर 4.8 है ना। मतलब खैर अभी हम हमारे पास एक हार्ड कॉपी नहीं, एक्यूरेट तो में वैल्यू नहीं आएगी, बट एक्स और वाई का हमने कहा Vmax सेम है, ठीक है। इट मींस यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपकी लाइक एंजाइम्स विल बी वर्किंग एट देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका Vmax कम है। अब क्योंकि तुम कंपैरिजन में आंसर्स दे रहे हो, तो ठीक है, सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस वन। सो फर्स्ट वी सेड कि यस एक्स एंड वाई आर द सेम, ठीक है। सेकंड, ठीक है, अब क्योंकि तुम कंपेयर कर रहे हो ना बेटा, तो तुम x और y के साथ अब तुम z को कंपेयर करो कि यस देयर Vmax इज हायर देन z, ठीक है। क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हो तो हर चीज को इंक्लूड करना है। हमने x और y सेम थे, दोनों को एक साथ कर लिया, अब हमें z के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखनी है। सो यस Vmax ऑफ x एंड y इज हायर देन z, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल इन्होंने 5 निकाली हुई है, अब लेट मी जस्ट लुक बैक, तो डेफिनेटली मैंने हो सकता है एक्यूरेट ना निकाली हुई हो। अब अगर तुम प्रॉपर हार्ड कॉपी साथ हो, तो दे आर सेइंग इज कमिंग एज 5, तो दिस इज 4, दिस इज 6, so somewhere definitely might be which is coming here, ठीक है। तो
ठीक है, सो इट्स हाफ दिस, अदरवाइज यू कैन सिंपली से कि x एंड y का जो Vmax है इज हायर देन z। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको लिखना है। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब हमें कंपेयर करना है km के बारे में, और km क्या बेटा था? हाफ द Vmax। अब तुम अगेन क्योंकि तुम कंपैरिजन कर रहे हो, तो व्हाट डू यू नोटिस अबाउट देयर km? अब km के लिए लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, अब हम उसे मार्क कर लेते हैं। km क्या था बेटा? हाफ द Vmax। x और y का Vmax आपके पास 10 था, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक बेटे? अब हमें km निकालना है। मैम आप निकाल। हाफ द Vmax निकालोगे ना? तो हाफ द Vmax निकाल रहे हो तुम अगर, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं x और z का km सेम है। लेट्स सी, तो वेयर डू यू थिंक बेटा, कहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करके और फिर मैं इसको नीचे लेके जाऊं? वेयर डू यू थिंक? ये x का है और ये y का है, तो वेयर डू यू थिंक? मैम 5 पे लगाएंगी ना? चलो चलो ट्राई करते हैं। अगर मैं 5 पे करती हूँ उसको, और मैं यहाँ नीचे लेके जा रही हूँ इसको, ठीक है, अब अगेन बेटा मेरा एक्यूरेसी वाला आंसर नहीं आ रहा होगा डेफिनेटली, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ हो जाए यहाँ पे। थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं। लेट्स सी, अगर फॉर इंस्टेंस दिस इज 5 और मैंने x को यहाँ कनेक्ट किया, तो इट सीम्स लाइक अराउंड 4। ठीक है, ये x का आ रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ दिस इज फॉर x। ओके, सबका बारी बारी निकाल लेते हैं। अच्छा, उसके बाद लेट्स वर्क आउट फॉर z ऑल्सो। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। z का बना लेते हैं, दिस इज z। सो z का बेटा अगर Vmax अराउंड समवेयर हेयर आ रहा है, तो ये 4 पॉइंट 5 से 2.5 समथिंग होगा, नहीं 2.2 समथिंग होगा। z ये है ना, z का Vmax यहाँ पे था, तो इसका हाफ द Vmax कुड बी समवेयर है ना, यहाँ होना चाहिए, समवेयर मैम होना चाहिए। 2.2 समथिंग। ठीक है, तो इसका भी अगर हम निकाल रहे हैं तो वो भी अराउंड यही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका निकालूं तो वो भी सेम आ रहा है। तो x का और z का आपका जो km है, इट इज कमिंग एज सेम। तो x भी लिख दिया मैंने, यहाँ पे z लिख दिया। एंड लेट्स वर्क आउट फॉर y, और उसके लिए एक डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। अब दिस इज y, और y भी बेटा सेम, क्योंकि x और y का Vmax सेम था, तो हम km निकालेंगे अगर। अब फ्रॉम द सेम एट आई एम एक्सटेंडिंग द लाइन एंड आई एम टेकिंग इट डाउन हियर, तो ये आ रही है अराउंड 6.5 लग रही है यानी मुझे। ठीक है, दिस इज वाई। ओके देन, अब बताओ अब क्या नोटिस कर रहे हो तुम? हमने सबके km निकाल लिए, और क्वेश्चन हमारा क्या था? विद रेफरेंस टू द फिगर कंपेयर द मैक्सिमम रेट ऑफ Vmax, वो हमने कर लिया, एंड द Michaelis-Menten कांस्टेंट फॉर दीस कर्व्स। सो अब व्हाट डू यू नोटिस? एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द km बेटे? और km में रिमेंबर यू विल बी टॉकिंग मैम अबाउट द एक्स सबस्ट्रेट। जी बेटे, और जेड सेम है, वाई डिफरेंट। ठीक है, तो x और z का km सेम है, ठीक है, और अगर ठीक है और y का डिफरेंट है, फाइन, चाहो तो स्पेसिफाई करने के लिए यू कैन एग्जैक्टली राइट द वैल्यू कि x और z की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, 4 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब, आप सेम यूनिट लिख देंगे। और आपने y की निकाली, तो y की लिखोगे 6 मिलीमोल आ रही है, फाइन, ठीक है। बट व्हाट डज इट टेल यू बेटे? एक की कम है और एक की ज्यादा है। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द सबस्ट्रेट एफिनिटी विद एंजाइम? हमने km के बारे में एफिनिटी की बात की थी। मैम एक्स की एफिनिटी ज्यादा है। ठीक है, x की और z की, एक्स की एफिनिटी ज्यादा है। ठीक है, so it means smaller the km, it means higher the affinity। ठीक है, और ये आपके कौन सा हो रहा था? आपका नॉन कंपैरेटिव, जो सबसे पहले if there was no inhibitor and with the non comparative inhibitor। ठीक है, इनकी एफिनिटी ज्यादा है। ओके, और आप इसके बारे में क्या लिखोगे y के बारे में?
उसकी एफिनिटी कम। इसका Km ज्यादा है तो इसकी एफिनिटी कम है। तो ठीक है, इट मेक्स सेंस आल्सो बिकॉज द थिंग इज बेटे जो आपका नॉन कंपेटिटिव था, इट एक्चुअली बाउंड टू द एंजाइम ऑन द एक्टिव साइट, इट डिस्टॉर्टेड द शेप, ठीक है, शेप डिस्टॉर्ट करने के बाद इट डिड नॉट लेट द सबस्ट्रेट अटैच टू इट। एफिनिटी ज्यादा थी जब भी तो जाके अटैच हुआ ना, है ना। तो इसीलिए जिस चीज की एफिनिटी ज्यादा यस होगी मैम। वहां Km कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो आपका जो दूसरा हमारा जो कंपैरेटिव इनहिबिटर था बेटे, इसकी एफिनिटी कम थी, दैट्स व्हाई द बेटा द Km वाज मोर। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नाउ बेटे? यस क्लियर मैम। हो गया? ठीक है, तो ये 4 मार्कअप का क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज इट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक मैं और आपको ट्राई करवाना चाह रही थी, दिस वन, ठीक है। अदरवाइज आई सेंड यू द मार्किंग की एंड द एग्जाम क्वेश्चन पेपर आल्सो, साथ से ट्राई करना, पे कुछ क्वेरी हो तो जरूर पूछ लेना, बट जस्ट अ फ्यू दैट आई वांटेड टू डिस्कस बिफोर वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर। अच्छा, अब here they are saying there is an enzyme DHPS, it is involved in the production of folic acid in bacteria. Okay, then अब the substrate for this DHPS is a molecule known as PABA या PABA. So this is the substrate. So let me just write it here so that we know, okay, this is a substrate. Okay, and then they are saying the enzyme is inhibited by a drug which is sulfonamide. So this, we are talking about an inhibitor also. The figure shows the structure of the actual substrate and the inhibitor. So this here beta is the inhibitor. Sulfonamide is a drug which will inhibit the process. Okay then. So now they have shown you diagrams X, Y, and Z. They represent these enzyme molecules and their active sites. And you have to state beta कि in तीनों में से which is actually the enzyme, because enzyme beta has the active site. So you look at these shapes and I'll take you back to the diagram there beta. So tell me, look at the shapes, ठीक है, then look at these, ठीक है. Or remember beta, when we talk about comparative inhibitors, it does not mean they have the same shape, it means they have the similar shape. कोई ना कोई चीज similar होगी जो आपकी एक्टिव साइट पे जाके लग रही है. सो इन दोनों को जरा तुम गौर से देखो, कोई सिमिलैरिटी लग रही है दोनों में. दिस इज योर सबस्ट्रेट, दिस हमें इज व्हाट लास्ट हैज वाला पार्ट H2 वाला, और इसके अलावा ये रिंग भी रिंग द सेम है, ठीक है. एक्टिव साइट में तो बेटा समथिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम्स और एजेस हैव टू गो एंड फिट. सो व्हाट डू यू थिंक बेटा, इनमें कॉमन क्या चीज है? समथिंग दैट कैन गो एंड फिट और बाइंड टू द एक्टिव साइट. मॉलिक्यूल्स देख लो, अरेंजमेंट देख लो, समथिंग यू थिंक शुड फिट. मैम ये वाई में लगेगा ना? कौन सा वाला लगेगा? इसमें और ये इसमें छोटा कोई वाला। सिमिलैरिटी है? Do you think these two can fit? No man, they're different. दोनों अलग है. And look at these also. Yeah, that can. These can. बिल्कुल ठीक है. So look at the similarity. So remember बेटा, they are never ever of the same नहीं होंगे, similar होगा कुछ ना कुछ. Now look at the structure, ठीक है. So this part here, this part here, and this part here, and likewise बेटा it is the same here also. And now let's go back and look at the enzyme active site. So अब इन तीनों में से where do you think बेटा will those fit? ये आपका जो comparative inhibitor है, कहाँ fit हो सकता है? ये तीन शेप्स हैं, तीन डिफरेंट वाई में। एंजाइम्स. किसमें? वाई में। वाई. चलो ठीक है, मैं अब देखो वाई को जरा गौर से. आई एम टेकिंग यू बैक टू, वे कोई बात नहीं, आई एम टेकिंग यू बैक टू द पिक्चर और अब डिसाइड करो. डू यू थिंक दिस थिंग कैन फिट ऑन वाई? गौर से देखो, ये चीज है और ये वाई है. डू यू थिंक इट कैन फिट? मैम एक्स में लगेगा। एक्स पे लगेगा. अगर हम गौर से देखें ये चीज पूरा, ठीक है, इट हैज टू बी एक्स.
ठीक है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ पे तो देखो इतना लंबा इस तरह करके दिखा दिया, तो दिस इज नॉट द केस विद दीज टू। ठीक है, ये दोनों में इतना लॉन्ग है ही नहीं, यहाँ पे लॉन्ग था बट ये चीज है। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा क्योंकि आपको सिंगल एक ही आंसर है इसमें, तो इट हैज टू बी एक्स। ओके देन, अब नेक्स्ट पार्ट बेटे, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द फिगर अबव, explain why sulfonamide acts as a comparative inhibitor of DHPS, 3 marks. So यहाँ पे बेटा आपको comparative inhibitor की features बताने basically कि what does it do? Think in terms of कि बेटा it binds to the active site, और recall करो कि क्या क्या हो सकता है। Think about their shape. अभी डिस्कस किया What was था the थोड़ी देर question? पहले। Comparative inhibitors की features बताने आपको, 3 marks है। They have the same shape. They have a similar shape to the substrate. Yes, इसके अलावा they bind to the active site बिल्कुल। temporarily, मतलब permanently, and They also temporarily bind होते हैं, lower permanently नहीं KM. होते। Lower Temporarily bind KM. होते हैं। KM कम करते हैं. KM कम करते हैं? No, हाँ, मैम KM कम. अच्छा नहीं, sorry. अभी ग्राफ पे चेक किया था हमने. KM कम होता है क्या Vmax? They would actually better increase the Vmax same था KM. मैम. Vmax तो यहाँ पे सेम था, वो ऊपर वाला क्वेश्चन तो टोटली खैर अलग था, यहाँ पे Vmax सेम था, बट जनरली बेटा कंपैरेटिव इनहिबिटर क्या करते हैं, दे हैव अ हायर KM बिकॉज व्हाट दे डू, दे बाइंड टू द एक्टिव साइट्स, ठीक है, बट वो Alright. आपके कर्व को थोड़ा छोटा कर देते। इफ यू लुक एट द सेकंड कर्व हियर, दिस वन हियर बेटे, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम स्लोअर, ठीक है, उसको स्लो कर देते हैं Okay. बिकॉज दे हैव एफिनिटी, बट एफिनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती विच इज एक्चुअली फॉर द एक्चुअल सबस्ट्रेट। एक्चुअल सबस्ट्रेट का जब आपका जब अगर तुम इसका वो निकालोगे ना, इसका क्या कहना चाहिए, जो तुम टेंजेंट से वो निकालोगे इसका, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, Gradient. ग्रेडियंट, यस थैंक यू वेरी मच, ठीक है, तो वो स्टीप होगा यहाँ पे, ठीक है, तो जितना स्टीप आपका ग्रेडियंट होता है इट मींस देयर इज मोर एफिनिटी, वहां पे केएम कम होता है, ठीक है, केएम जैसे जैसे इंक्रीज होगा इट मींस एफिनिटी इज लो, ठीक है। इसी वजह से जब कंपैरेटिव इनहिबिटर के केस में आप और ज्यादा सबस्ट्रेट शामिल कर देते हो उसी आपका जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, इफ यू पुट इन मोर सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट्स की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, दे कैन नॉक आउट दीज कंपैरेटिव इनहिबिटर्स फ्रॉम द एक्टिव साइट एंड दे कैन देमसेल्व्स अटैच देयर। तो इसी वजह से सबस्ट्रेट बढ़ाते बढ़ाते इवेंचुअली बेटा यू रीच द सेम वैल्यू। इसी वजह से यहाँ पे Vmax सेम बताया था दोनों का, जहाँ पे इनहिबिटर कोई था नहीं और यहाँ पे कंपैरेटिव इनहिबिटर था। Alright, Okay, ma'am. so let me show you the answer key also, so you get the exact answer. We were on question number 3, I believe. Yes. Okay. So again, beta, you will be writing about the substrate. Okay, and see beta, the term similar shape is used, and clearly they are saying, agar aapne same likha, it will not be credited at all. Okay, similar shape likho ya similar structure, this will be accepted. Okay, and then and का मतलब है write about both of them. You write about the substrate as well as inhibitor. Both of them have similar shape. ठीक है, या both of them have similar structure, and make sure बेटे आप नाम बिल्कुल, क्योंकि उसमें पेपर में नाम गिवन है तो आप नाम भी यूज कर सकते हो, और you can use substrate and inhibitor. ठीक है, then you have talked about this. It will bind to the active site. So again बेटा underline, they're looking for this term. ठीक है, and yes, the shape is complementary to the active site. So this is one more point that you need to add. ठीक है, and what else you can then write about this बेटा, क्योंकि उसमें NH2 if you recall from the diagram, see दोनों में ये चीज सेम थी, you can, so because whatever that is visible to you in the diagram आप उसको बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। See बेटा, this was same, NH2 amine group was same on in both of them। ठीक है, what else, and then other details उन्होंने दी हुई है, but it was of 3 marks, so maximum आप शुरू के ही points लिख दो, so you can easily better attain these 3 marks here. Clear बेटे? Clear, ma'am. ठीक है, अच्छा, and now बेटे one more thing that I wanted to discuss is these graphs. आपके पेपर 1 में बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है और अक्सर रॉन्ग आपके आंसर्स आ जाते हैं. So let's discuss this. So we have an enzyme which is completely denatured at 50 degrees Celsius.
and a fixed concentration of this enzyme is added to a fixed concentration of substrate. So enzyme की concentration भी हम कहीं increase नहीं करें, वो fixed है, और substrate भी fixed है. We are only looking at the temperature here. बेटे. So time taken for completion of this reaction is measured at different temperatures. ठीक है? हम सिर्फ ये नोट कर रहे हैं कि इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट होने में हर टेम्परेचर में कितना टाइम लग रहा है. तो वी आर नोटिंग, ठीक है, मतलब हर टेम्परेचर में हम नोट कर रहे हैं कि 10 डिग्री पे ये रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 20 में कितना टाइम लग रहा है, 30 में. तो वी आर लुकिंग टिल 50. ठीक है. अब यू हैव बीन गिवन 4 ग्राफ्स एंड देन आस्किंग यू विच ग्राफ शोज यू द रिजल्ट. ठीक है. और अगेन ऐसे क्वेश्चन बेटे सबसे पहली चीज जो नोटिस करना, मेक श्योर कर लेना एक्स और वाई एक्सिस में उन्होंने दिया हुआ क्या है आपको. ठीक है. यहाँ पे क्लियरली बेटा दे हैव गिवन यू टाइम. एक चीज और ध्यान में रख लो बेटा, जब भी ग्राफ आपका इस तरह इंक्रीज हो रहा होगा, इट हैज टू बी रेट. ठीक है. रेट ऑलवेज टेल्स यू बेटा द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन या हाउ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम. ठीक है. रेट के और टाइम के ग्राफ में डिफरेंस होता है. ठीक है. यहाँ पे जो आपका ग्राफ होगा, सो जस्ट यू टेल मी फर्स्ट कि आपने क्वेश्चन रीड किया, पहले खुद बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए. And I've told you also कि there is a difference between rate and time graph. You have different temperatures और आप देख रहे हो कि different temperatures पे enzymatic हम activity देख रहे हैं और it will be denatured at 50 degree Celsius. So सबसे पहले तो जो लगता है हो ही नहीं सकता उसको rule out करो. मैम मुझे लग रहा है डी है. अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ फिलहाल मार्क कर देती हूँ. ओके. किसी और को कोई और चीज लग रही है डी के अलावा? और कोई आइडिया? वही तो मैम मुझे लग रहा है सी है, बिकॉज़ ए और बी तो पॉसिबल ही नहीं है, और डी पे भी 50 पे काम कर रहा है, लेकिन 50 पे ऊपर लिखा है टीनेजर हो जाएगा, तो सी पे जो है 50 पे है ही नहीं ग्राफ का पार्ट, तो आई एम गोइंग विद सी. ओके ठीक है. तो ठीक है, आंसर तुम्हारा करेक्ट है. ठीक है, बट लेट्स डिस्कस दैट आल्सो. सो रिमेंबर बेटा, रेट का ग्राफ हमेशा ऐसे और टाइम का ग्राफ बनता है बेटा इट्स इन्वर्टेड ग्राफ. एक ये चीज ध्यान में रख लेना. दूसरा, यहाँ पे तो वैसे ही ऑब्वियस, एक तो टेम्परेचर भी दिया हुआ थी तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. और डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू बेटा ये इन्वर्टेड ग्राफ्स टाइम के होंगे, तो दिस डेफिनेटली इज नॉट द केस. अच्छा, अब सी और डी में क्या कंफ्यूजन है? सो थिंक अगेन बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, तो उसकी एक मिनिमम रेंज होती है, बहुत बड़ी रेंज नहीं होती. जैसे यहाँ पे तुम देखो 20 अराउंड, मतलब 17 till 40 जा रहा है ये. और क्योंकि ये पार्ट है बेटा वेयर इट इज वर्किंग एट इट्स ऑप्टिमम, क्योंकि यहाँ से उन्होंने टाइम मेजर शुरू किया, लेट्स से 50 मिनट्स उन्होंने शुरू किया, एंड दे लुक्ड एट कि भाई हर टेम्परेचर में कितना टाइम लग रहा है हर टेम्परेचर में डीनेचर होने पे. ठीक है. सो दे केप्ट ऑन नोटिंग द टाइम हियर. दिस इज द पार्ट बेटा वेयर इट इज वर्किंग एट इट्स ऑप्टिमम लेवल. और यहाँ पर रेंज बहुत ज्यादा है. ऑप्टिमम टेम्परेचर की या ऑप्टिमम वर्क जो एंजाइम करता है बेटा, उसकी बहुत बड़ी रेंज कभी नहीं होती है. ठीक है. इट्स अ नैरो रेंज देयर. एंड देन बेटा इफ यू जस्ट सी हियर 50 पे, इट इज एक्चुअली बेटा गोइंग टिल 50 पे, उससे डीनेचर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ तक उन्होंने ड्रॉ किया, हो सकता है और ऊपर जा रहा हो. तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन हियर. ठीक है. सो यू आर राइट अबाउट सी, बट यहाँ पे क्या बेटा, इतनी बड़ी रेंज कभी नहीं होती ऑप्टिमम उसकी. आर यू गेटिंग इट बेटा? या मैम सी जो है उसमें लाइक 50 पे जो है वो ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है. हाँ, तो मेक सेंस कि डीनेचर हो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. बिल्कुल. गुड. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा what else? चलो let's try this one. So they're saying which statement is true of all the enzymes, so read very carefully and then decide बेटे, क्योंकि हर चीज हर एंजाइम के लिए ट्रू नहीं होगी. So if you think of temperature, they are denatured at temperatures above 60. तो क्या सारे के सारे हो जाते हैं 60 पे denature? या मैम सारे हो जाते हैं. They're proteins. डिपेंड्स ऑन. कुछ तो बेटा बहुत हाई, बहुत ज्यादा ऐसे टेम्परेचर से भी कर सकते हैं. रेंजेस होती है. कुछ ऐसे होते हैं एंजाइम जो बहुत हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ अपने. कौन सा होगा बेटा? डी. नहीं डी नहीं तुम होगा. कह रहे हो दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी. सी.
ओके अच्छा, पहले ऐसे करते Catalase जो breakdown तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है ना उसको रूल आउट करो, कम से कम ऑप्शन होंगे ना तो आसानी हो जाएगी डिसीजन लेने में। तो ए तो डेफिनेटली नहीं है, कट कर दिया, 3 रह गए। दे आर इनएक्टिवेटेड एट लो पीएच, तो क्या सारे के बी सारे मैम एंजाइम सेम लो है। पीएच पे हो जाते हैं? इफ यू रिकॉल बेटा, पेप्सिन जो था वो तो पीएच ऑफ 2 पे काम कर रहा था, अमाइलेज अराउंड नहीं 7 नहीं, पॉइंट समथिंग पे कर रहा था, ठीक है, तो मैम ये भी भी हमने गलत है। रूल आउट कर दिया। अब बचे 2 ऑप्शन, अब सोचो इसमें से। दे कैटलाइज अ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो खाली लार्ज मॉलिक्यूल्स को कैटलाइज करते हैं, ओह मैम ये तो डी है, ये ऑब्वियसली डी है। ठीक है, तो रूल नहीं आउट नहीं कर दो। तो ये डी है। डेफिनेटली जाहिर बात है स्मॉल से भी तो लार्ज बन सकते हैं, ग्लूकोज से अगर मुझे ग्लाइकोजन बनाना है, ठीक है, तो वी कैन यूज एंजाइम देयर, सो डेफिनेटली बेटा डी, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी ही तो बेसिकली बेटा ये कम कर रहे थे, ठीक है, दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, सो डी इज द ऑप्शन, ठीक है। सो एमसीक्यूज में बेस्ट यही होता है बेटा, जो जो नहीं लग रहा है ना उसको वहीं काटो ताकि कम से कम ऑप्शन में तुम्हें डिसीजन लेना आसान हो। ओके, इसके अलावा अब ये देखो, तो मैं थोड़ा और छोटा कर दूं ताकि सारी डायग्राम्स नजर आए। जी बेटा, so a quantity of an enzyme was added to a quantity of its substrate, and the graph shows the changes in concentration of the enzyme, the substrate, enzyme substrate complex and the product over time. ओके, अब इसमें से इन्होंने 4 चीजों के ग्राफ है हमारे पास, एंजाइम का है, सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड प्रोडक्ट ओवर टाइम। ऑल ऑफ देम इट हैव दिस टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस, और उसमें अब आपको मुझे बताना है विच ग्राफ शोज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जरा गौर से सबको देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में लग रहा है कि मैम enzyme substrate complex A, simply A। ओके, अब इसे एक्सप्लेन करो बाय ए। No, I think बताओ तुम्हें मैम एक लग रहा है? एंजाइम की कंसंट्रेशन सेम रहेगी तो फिर सी हो गया, एंड एंजाइम की कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, वो सी हो गया, एंड आई रूल दैट आउट। फिर उसके बाद रिएक्टेंट्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे, लाइक सिंपल डिक्रीज होंगे, डी रूल आउट हो गया, प्रोडक्ट्स बनेंगे, बी भी रूल आउट हो गया, लास्ट में ए बचा। ये एक वन अप्रोच है। सेकंड अप्रोच कॉमन सेंस यूज करें हम कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे और फिर डिक्रीज होंगे बिकॉज प्रोडक्ट बनना है इन्हें। तो एक ही ग्राफ है जो कि लाइक इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, जो कि ए है। लाइक 2 अप्रोचेस हैं इस क्वेश्चन की, ये और भी हो सकती हैं। क्योंकि अगर तुम मुझसे वही सबस्ट्रेट वाले सबस्ट्रेट से ग्राफ से करके देखो, तो शुरू में जब तक सबस्ट्रेट ज्यादा, आपका एंजाइम ज्यादा है, सबस्ट्रेट कम है, बट शुरू में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपके ज्यादा बन रहे होते हैं, और जब यहाँ पे बेटा ऑल द एक्टिव साइट्स आर एक्चुअली ब्लॉक्ड है जब सारी, तो डेफिनेटली बेटा इट विल फिर ये नीचे शो करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेंगे ही नहीं। यहाँ पे आप जितना भी सबस्ट्रेट डाल दो, अगर सारी ही एक्टिव साइट्स ऑलरेडी बेटा ऑक्यूपाइड है, तो एंजाइम में वो लग ही नहीं सकता सबस्ट्रेट जाके। तो दिस वन यस मेक सेंस कि शुरू में बढ़ेंगे, जैसे जैसे जब तक एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट अवेलेबल है, सबस्ट्रेट विल कीप ऑन कनेक्टिंग टू इट, ठीक है, बट जैसे ही बेटा उसकी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गई, तो डेफिनेटली नो मोर विल बी अटैच्ड। इट मेक सेंस, ए ही लग रहा है, एंड ए इज द आंसर। गुड, अच्छा इसमें बताओ, initial rate of reaction catalyzed by an enzyme was measured at various substrate concentrations. Which graph shows the effect of low concentration of non-competitive inhibitor on the reaction? And they have given you the key. So remember, non-competitive binds on the site other than the active site. It changes the shape of the active site. So think on those lines, और फिर अब देखो कौन सा ग्राफ लग रहा है सही। yeah, I guess A. A. Anyone else with it? I don't know why, like D लग रहा है, because इतना आसान क्वेश्चन दे नहीं सकते। थिंक अबाउट इट बेटा, देखो जैसे जैसे आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज ही होगा ना। You have the Yeah, fixed number of we have fixed number of enzyme here,
ठीक है, और जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं बेटे, यू आर गेटिंग मोर ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस हियर. दिस इज योर Vmax. ठीक है, द पार्ट वेयर एंजाइम इज वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम. तो ये जो डॉटेड दिखा है, दिस इज फॉर अनइनहिबिटेड. ठीक है, जब एक्चुअल सबस्ट्रेट इज एक्चुअली बाइंडिंग टू द एंजाइम. और नॉन कंपैरेटिव क्या कर रहा है बेटा? इट इज बाइंडिंग टू द साइट विच इज अदर देन द एक्टिव साइट. वो यहाँ पे जाके लग रहा है. It is actually making this active site going a conformational change, so the actual substrate cannot bind to it. जब substrate bind ही नहीं हुआ तो enzyme substrate complex नहीं बना. वो नहीं बना तो आगे product नहीं बना. So then look at these बेटे, because rate of reaction progress करती है at this rate. ऐसा नहीं होता कि शुरू में जैसे वो बढ़ी फिर वो कम हुई फिर वो बढ़ी, इस तरह नहीं होता. And likewise बेटे, this cannot also happen. This is showing a direct relationship. Think about it. ठीक है, सो एक दफा रिवाइज जरूर कर लेना बेटे, कंपैरेटिव, नॉन कंपैरेटिव और उसका अनइनहिबिटेड रिएक्शंस को. द ग्राफ इज लाइक दैट. इनफैक्ट अभी बेटा हमने शुरू में ये वाला जो क्वेश्चन किया यहाँ पे इस वाली स्लाइड इसमें, इफ आई कुड जस्ट शो यू, सी बेटे, वी डिड द सेम डायग्राम में आपको उन्होंने अनइनहिबिटेड रिएक्शन दिखाए. The blue one जो ये वाला, ये comparative inhibitor है, and this one is a non-comparative. Yeah, ma'am, got it. समझ में आ गया. Okay, so A is the answer. और एक मैं और आपको करवाना चाह रही थी. ठीक है, so don't worry, मैं भेज दूंगी तुम्हें. But एक था जिसमें initial rate में करना था, this one. ठीक है, so catalase was added to hydrogen peroxide solution. Volume of oxygen produced was measured at intervals. So this is the volume, this is the time in seconds, and the graph is shown. So it is showing that with time, हमारा जो product है, oxygen gas is being collected. So what was the initial rate of reaction? So how would you calculate this बेटे? ठीक है, so initial का मतलब बेटा जब maximum, जहाँ पे जैसे ही reaction शुरू होता है वो वाला part. तो इस केस में what do you think बेटे? मैम बी. B. ठीक है, वो वर्कआउट किया. If this यस is 10, मैम, this वो is आपने 20. फॉर्मूला बताया था उससे. ठीक है, तो क्योंकि हम अगर y लेते हैं 1 और ये मेरी 10 है तो 1 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू b. ठीक है, तो मेक श्योर बट, और इनिशियल रेट के अक्सर आपके एमसीक्यूज आते हैं. सो मेक श्योर इट इज, और जैसे ही रिएक्शन शुरू हो उसी वक्त उसको आप शुरू में आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, लेट्स ट्राई दिस वन. द ग्राफ शोज द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड pH on enzyme activity, and we have been given different symbols. So here they are saying, एक मिनट इसको हम बड़ा कर देती हूँ, मतलब जी बेटे. So which statement explains the enzyme activity at the point shown? So for P, hydrogen bonds are formed between enzyme and substrate. Q में कह रहे हैं the kinetic energy of enzyme and substrate is the highest. So think about it, temperature तो और increase हो रहा है यहाँ पे. At R, the peptide bonds in the enzyme begin to break. And at S, the substrate is completely denatured. So which one makes sense? B, the hydrogen bonds are formed between. No, it's not B. It's C. At R, the peptide bonds in the enzyme begin to break. Could be D. Okay, so you're saying at S, the substrate is completely denatured. So think about it, substrate denatured होते हैं, enzyme denatured. Oh, no. It's C. It's C. Okay, it can't be D. अच्छा, C तुम कह रहे हो at R, the peptide bonds in the enzyme begin to break. तो R तो बेटा optimum level है जहाँ पे वो काम कर रहा होगा. So do you think bonds So it's break? after R.
एट आर कह रहे हैं ना, एट आर बोले पर्टिकुलरली, आर इज दिस पीक, या तो ऑप्टिमम पे काम कर रहा होगा, क्योंकि एक्सट्रीम्स पे बॉन्ड्स टूटेंगे, या तो यहाँ पे या यहाँ पे. Well, it cannot be P, so it must be A then. Okay, Q था, the kinetic energy of enzyme and substrate is the highest, so that can't be true because definitely बेटा bonds टूटेंगे जब उसके kinetic energy और ज्यादा हो जाएगी, जब भी वो denature होगा. अच्छा, why does P make sense? क्योंकि hydrogen bonds are formed between enzyme and substrate, so if you think about it बेटा, शुरू में आपके पास enzyme ज्यादा है, concentration सी दोनों की same है, बट शुरू में बहुत कम substrate जाके enzyme substrate complex बनाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो concentration बढ़ती चली जाती है. तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कनेक्ट भी हो रहा है बेटा, देयर इज डेफिनेटली बॉन्डिंग बिटवीन देम. सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, और आगे जाके बिल्कुल बेटा व्हेन ऑल द एंजाइम्स एक्टिव साइट्स आर एक्चुअली ऑक्यूपाइड विद सबस्ट्रेट, वहां पे वो Vmax रीच कर जाता है. ठीक है, सो पी शुड बी द करेक्ट आंसर बेटे. हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट पी, क्योंकि यहाँ से देखो रिएक्शन आपका प्रोसीड कर रहा है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, it is the speed of reaction, it is telling the progress of reaction over time. Got it, bete? Mm-hmm. Okay, so A should be the final answer. It's A. Okay, let's see this. So 2 enzyme experiments were carried out, and you have 2 graphs for both of them. First experiment, X was carried out at a constant temperature of 37. During the second experiment, the temperature was increased from 37 to 80. So which of these graphs do you think, bete, shows the correct results? And all of them are like product concentration over time. Think about enzymatic activity at these temperatures. एक 37 और एक 80 है, और X already आपको बता दिया, X is this one. Kinetic particle theory. In the second experiment, did they increase it like from 37 to 80 at the duration, or like was it just 80 from the start? 80. 37 से शुरू किया था उसको, और यहाँ पे 80 पे उन्होंने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया. Then it must be D, maybe. Okay, let's see. If you look at D, D तो बेटा ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट बड़ा था, वो प्रोडक्ट कम हो गए. तो इसको देख के तो ये लग रहा है, यहाँ पे हमें लग रहा है प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, इधर तो देख के लग रहा है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ था और वो खत्म हो गया. तो डी तो डजंट मेक सेंस. क्योंकि इसमें एंजाइम्स और सबस्ट्रेट दोनों है, और आप टेम्परेचर पे चेंज देख रहे हो. So think again, but in terms of temperature, it must be A. Okay, अच्छा, if we think if it must be A कि 80 है, तो ठीक है, कोलिजन ज्यादा हुई, इन आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा बने. ठीक है, और डेफिनेटली बेटा you will reach Vmax earlier. ठीक है, but at the same time because of higher temperature, denaturation शुरू हो जाएगी. ठीक है, so even if you have a lot of substrates, if you have a lot of substrate, even वो enzymes पे attach होंगे ही नहीं. ठीक है, so you will not get the same desired product that you want. ठीक है, so A makes sense. ठीक है, और this one definitely नहीं बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट ये नहीं होगा कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही खत्म हो गए, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें फिर भी मिलेगा, क्योंकि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन से तो फिर भी स्पीड अप होगा, you can get some product. And what do you think, why can't this be? ये किस चीज का ग्राफ दिख रहा है? Because it's this is for a higher concentration. This is for comparative inhibitor. And even then, because यहाँ पे तो ये लग रहा है कि 80 पे बढ़ के, and it is actually we are getting more of the products, which we do not get, क्योंकि enzymes denature हो जाएंगे. So A is the answer. Okay, let's try this one.
which properties are characteristics of a non-competitive inhibitor of an enzyme? Non-competitive. So you have to talk in terms of कि वो bind कहाँ करता है, and then it effect of adding more substrate. तो पहले तो exclude कर लो कि जो तुम्हें लग रहा है कि हो ही नहीं सकता. Look at the binding sites. A and B. ठीक है. So let's just इनको cut कर देते हैं. अब look carefully at B and C. Sorry, C and D. Well, D. Okay. Even if you add a substrate, it does not reduce inhibition. D seems correct, and let's see, and D is the answer. Okay, D is the answer. Good. Okay, let's look at this one. Because again, beta, as we discussed, initial rate of reaction का सवाल आता है. ठीक है, so catalase was added to hydrogen peroxide solution. Volume of oxygen produced was measured at intervals. So volume of oxygen, beta, the product, the gas is being collected. ठीक है, and like this much is started from 0, or ठीक है, around like 180 seconds से भी ज़्यादा पे we have collected this much, and the results are shown, and you are asked to find the initial rate of reaction. So initial rate में बिल्कुल starting का rate है. So how do you think that you will actually find the initial rate? इस curve के अंदर हम क्या करेंगे? First, the steep part of it will be बिल्कुल. measured. So like the first 30 seconds हाँ, or 60 अब ये seconds. बिल्कुल. So already like you can actually, because this seems like the steepest, यहाँ पे फिर भी काफी हद तक straight line लग रही है. If you actually draw a line here also, ठीक है, and it seems like better if we just look at these, so we can actually divide that into blocks like 10, 20, 30. सब में ऐसा ही gap है. So it seems like better this and this. So you can actually better because it's change in y upon change of x, change in x. So 1 divided by 10. So अब इन options में से तुम्हारा आंसर तुम्हें क्या लग रहा है? B. B should be the answer, and B is the answer then. ठीक है, and यहाँ देखिए बेटे. A fixed volume of enzyme catalase was added to a fixed volume of hydrogen peroxide. Diagram shows how the rate of reaction changed over. I don't know ये क्या लिखा है, कुछ कट गया. Over the course of reaction लग रहा है, course of reaction. Why did the actual rate of reaction decrease over time? So 4 options है बेटे. So decide, what do you think? जी बेटे. Actual rate, why is it decreasing over time? D. Molecules get used up. There are less molecules interacting with the active sites. Mm-hmm. So that's why the rate of reaction decreases. Okay. ठीक है, let's look at the answer key and good. Okay. Which levels of protein structure are always involved with competitive and non-competitive inhibitors bind to enzymes? So वैसे तो खैर हमने शुरू में जब स्लाइड पढ़ी थी तो we talked about the structure, but ये है कि अगर हम आगे biological molecules में proteins जब पढ़ेंगे तो हो सकता है ये ज़्यादा बेहतर हो जाए तुम्हारा concept, but still if you think of any idea बेटे, क्या आंसर लग रहा है तुम्हें? Which level the protein structures are always involved in competitive and non-competitive? No, I don't have any idea about this. ठीक है, होता है इसका बेटा basically tertiary structure. ठीक है, enzymes जो होते हैं बेटा proteins, but they have a tertiary structure. But ठीक है, ये definitely जब हम biological molecules करेंगे तो we'll talk about all of them, तो ज़्यादा clear हो जाएगा. And ठीक है, we have only a few left. I think second last है ये. The graph shows the course of an enzyme catalyzed reaction at 30 degrees Celsius. So product, and here they have shown you X. And they are saying what is true at time X. So read, and what do you think, Vijay? Most enzyme molecules left reactive sites. No. The number of available substrate molecules is high. Yes. The number of enzyme substrate complexes is low. The rate remains the same if more enzyme is added. No, it's B. Number of available substrate molecules is high.
and it's B. Got. And I think ये exactly वो ये जो हम ऊपर कर चुके हैं denaturation of enzymes का 50 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पे इन्होंने एक दो डिफरेंट ग्राफ्स इस तरह करके दे दिए हैं. और ये वाला सवाल ना दो रिपीट हुआ है, ऐसा एक 2000 अर्ली 2000 में हुआ है और उसके बाद ये 2013 में रिपीट हुआ है. तो ठीक है, these two graphs are same, we have already discussed these, और next two इन्होंने इस तरह करके दे दिए. ये वही टाइम कंप्लीशन फॉर दिस. तो डू यू थिंक these two will be correct? टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो रहा है, ये रेट बढ़ता जाएगा, तो these two तो जनरली हो ही नहीं सकते. फिर then again but you have to choose from A or B. Then have a close look at this. Time is given. It's A. It's A. ठीक है, and it's A. ठीक है बेटे, so I'll send you all of these. This video will go through the enzyme graphs, going through key mark points needed for the describe questions and the explain questions. This graph asks you to describe the effect of temperature on the rate of an enzyme-controlled reaction. The describe implies that you've got to tell the examiner what the graph is doing. You can see that the rate of reaction increases to an optimum or maximum rate and then it decreases. That's all you need to tell the examiner, but you won't get the mark unless you refer to the x-axis. So the rate increases between whichever temperatures to a maximum or optimum at a specific temperature, and then it decreases between which temperatures. Make sure that if the question asks you to refer to a specific range of temperatures, you only describe those, because you won't get credit for describing any other parts of the graph. These are your key mark points. In an explain question, you've got to tell the examiner why the curve is that shape. So initially the rate of reaction is increasing. This is because there's more kinetic energy, there's more enzyme substrate collisions, more substrate is able to bind to the active site. Therefore, the rate of reaction is increasing. There's more product being made. As the temperature increases further, though, the rate starts to decrease. This is because the high kinetic energy causes hydrogen bonds to break. This changes the shape of the tertiary structure of the protein. If it changes the shape of the active site, it's no longer complementary to the substrate. The substrate can't bind, so there's fewer enzyme substrate complexes. The enzyme has been denatured. These are the key mark points for this question. Explain the effect of temperature on the rate of an enzyme-controlled reaction. This graph shows the effect of pH on the rate of an enzyme-controlled reaction. Again, if the question asks you to describe, you are describing the shape of the graph. The graph, as you can see, shows the rate increasing, then decreasing. Refer to the optimum rate of reaction and state the pH. Remember to refer to the x-axis. To explain the effect of pH on the rate of reaction, you have to tell the examiner why the rate decreases as you move away from the optimum. Here, you've got to explain in terms of enzyme substrate complexes forming. If you change the pH, you change the concentration of hydrogen ions, and hydrogen ions will interfere with hydrogen and ionic bonds in the tertiary structure. This could change the shape of the active site, so it's no longer complementary to the substrate, so fewer enzyme substrate complexes can be formed. These are the key mark points that you need to know. Describe the effect of substrate concentration on the rate of reaction. Same rules as before. Tell the examiner about the shape of the curve. Remember to refer to the x-axis. So rate increases between whichever substrate concentrations you read from the x-axis, and then it levels off. This is the maximum rate of reaction. Again, refer to the concentration at which it levels off. These are the key mark points you need to know. Now you need to explain what's happening.
Initially, the rate is increasing as the enzyme is in excess. There's lots of active sites available. So if you add more substrate, the active sites just get more full and the rate of reaction increases. The graph then levels off because the enzyme then becomes limiting. All the active sites are full, so adding more substrate won't increase the rate because there's no more active sites available for the substrate to bind to. The active sites are all full, the enzyme is fully saturated, the graph levels off. These are the key mark points. This graph asks you to describe the effect of a competitive inhibitor on the rate of the reaction. You can see that the competitive inhibitor decreases the rate of reaction at a given substrate concentration. However, if you continue to add more substrate, so the substrate concentration is increasing, eventually the rate of reaction reaches the same rate as a reaction with no inhibitor in it. It will reach Vmax. Explaining the effect of a competitive inhibitor, you're telling the examiner why. First of all, the rate decreases because the competitive inhibitor has a similar shape to the substrate. It has a complementary shape to the active site, so it is also able to bind to the active site. This means that fewer active sites are available for the substrate to bind, or fewer enzyme substrate complexes can be formed. However, the rate increases as you add more substrate. This is because the substrate is now in excess, so there is a greater chance of collisions between enzyme and substrate rather than between enzyme and inhibitor. So the rate will increase, eventually reaching the maximum rate, or Vmax. These are your key mark points. Describe the effect of a non-competitive inhibitor on the rate of reaction. You can see that if you add a non-competitive inhibitor to an enzyme-controlled reaction, initially, as you increase the substrate concentration, there is a slight increase in the rate of reaction, but the presence of the non-competitive inhibitor means it levels off at a lower maximum rate than in the absence of the inhibitor. Explaining the effect of a non-competitive inhibitor on the rate of the reaction, you need to tell the examiner that the non-competitive inhibitor is a molecule or substance that binds to the enzyme but away from the active site. When it binds to the enzyme, it changes the shape of the active site. This means that the substrate is not able to bind to the active site. Effectively, there are fewer active sites available for the substrate to bind, so the maximum rate of reaction, or Vmax, cannot be reached. These are your key mark points. This is a practice question that you can have a go at, just to check you understand the difference between describe and explain. In our last video, we looked at why we need enzymes and how they work. In this video, though, we'll consider how temperature and pH affect the functioning of enzymes. And in order to measure this, we need to know how to calculate the rate of a chemical reaction. Let's start with temperature. This here is a graph that shows how the rate of an enzyme-controlled reaction changes with temperature. We can see that as temperature increases, so does the rate. But after about 37 degrees, the rate starts to drop rapidly. This is because the high temperatures start to break some of the bonds holding the enzymes together, and so the active site starts to change shape. If it changes shape too much, then the enzyme won't be able to bind the substrate and catalyze the reactions anymore. And at this point, we'd say that the enzyme has been denatured. The temperature at which an enzyme functions best is known as its optimum temperature. So the optimum temperature of this enzyme would be 37 degrees, because that's the temperature at which the rate peaks.
As the human body is generally kept around 37 degrees, this is a pretty common optimum temperature for human enzymes. But different enzymes can have different optimum temperatures. Now, if you remember from chemistry, pH is a measure of acidity. And we can see by looking at this graph that if the pH is too high or too low, it can lower the rate of the reaction. Just like with high temperatures, this happens because the enzyme's bonds start to break, which causes the active site to change shape. At first, there may just be a small change in shape, so the substrate can still fit, just not quite as well. This slows down the rate of reaction, but doesn't quite stop it. Soon though, the active site changes shape so much that the substrate can't fit at all, and at this point the enzyme is said to be denatured. The optimal pH will depend on where the enzyme normally works. For example, most enzymes in our body work best at neutral pHs of around 7, whereas the enzymes that work in the stomach, for example, have an optimal pH of around 2, because that's the rough pH of the stomach. In order to create a graph like the ones we've just seen, we need to be able to calculate the rate of the chemical reactions ourselves. Now, what exactly we do is going to depend on the particular question, but generally, we would be told how much a certain reactant or product changes by, and the time that it took to change. And then all we do is divide the change in reactant or product by the time it took. For example, a question could sound something like this. An enzyme-controlled reaction produces 30 centimeters cubed of hydrogen gas in 2 minutes. What was the rate of reaction in centimeters cubed per second? So for this question, we would divide our 30 centimeters cubed of hydrogen gas, which was produced as a product, by the time of 2 minutes. But because we need our answer to be per second, not per minute, we have to multiply our minutes by 60 to get 120 seconds. And so our answer would be 30 over 120, which is 0.25 centimeters cubed per second. That's it for now. If you enjoyed it, do give us a like and subscribe. Or if you have any thoughts about anything we could do differently, then just let us know down in the comments below. Otherwise, we'll see you next time.